Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. For the latest update, do not forget to hit the bell icon. In this video, we are going to discuss the topic which is third chapter of class 9th physics, that is gravitation. So the topics to be discussed in this video are gravitation, universal law of gravitation with mathematical derivation, value of capital G, which is also called universal constant, unit of universal constant, numerical problems based on universal law of gravitation, Kepler's law of planetary motion, free fall, acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity, and at last we will calculate the value of acceleration due to gravity, that is small g. So let us know what is gravitation. It is a force of attraction acting between two bodies due to their masses. Okay, it is a force of attraction between two bodies which act due to their masses. We can define gravitation as a force of attraction acting between two bodies due to their mass is called gravitation. It is the weakest force in nature, but it becomes sufficient when large massive bodies are involved. ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, बट यहाँ पे जो है जब बहुत बड़ी बॉडीज होती है, बहुत लार्ज मास की बॉडी होती है, तब उस वक्त जो होती है ये दोनों को अट्रैक्ट करने में बहुत सफिशिएंट होती है. Now I'm going to tell one story of Sir Isaac Newton. Once he was sitting under an apple tree and suddenly one apple fall on his head. Okay, here you can see in the picture, once Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree and apple suddenly fall on his head, and he started thinking about the force which caused it to happen. He started thinking, why does apple fall towards the earth, why not upward? ठीक है, वो सोचने लगे कि ये जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. Okay, so that time he started thinking and he discovered one force which attracts all the things towards itself, means toward earth surface. That force, later he named it gravity. Okay, उस फोर्स को बाद में इन्होंने नाम दिया, that is gravitational force which pulls each and everything towards its. Now we will discuss what is universal law of gravitation. It states that the gravitational force of attraction between any two particles is directly proportional to product of their masses, or we can say product of particles, and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, in short word we can say the gravitational force of attraction between any two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Here we consider two objects whose masses are m1 and m2. The masses of the objects are different. First object is, let it be A, and second object, let it be B, and the distance between them is small r. So according to the law of gravitation, F means the force of attraction between, or gravitational force of attraction between mass m1 and m2 is directly proportional to m1 into m2, product of their masses, and also it is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, square of the distance means r is the distance between m1 and m2. m1 और m2 के बीच में जो r है, it is distance. And what does universal law of gravitation say?
universal law of gravitation says that the force of attraction between two particles is directly proportional to the product of their masses, and also it is inversely proportional to the square of the distance between them. So on combining these two, we can write F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square. हम लोग इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो force of attraction है between any two particle of masses m1, m2, and if the distance between them is r, then it is directly proportional to the product of their masses m1 into m2 and inversely proportional to the distance between them. Okay, so to remove this sign of proportionality, we add one constant here, and this constant is known as universal constant of gravitation. Okay, it is also known as gravitational constant. So F is equal to G m1 into m2 divided by r square. This is the equation of universal law of gravitation. Later we will discuss what is the value of universal constant of gravitation. Now we will find what is the value of capital G, or we can say universal constant. Okay, experimentally the value of G was calculated 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, now we will find that what is the value of capital G. If the masses m1 and m2 of two bodies are 1 kg each, let the masses m1 and m2, m जो है वो भी 1 kg की है, m2 is also of 1 kg, and also the distance between them is 1 meter. Okay, then the gravitational force acting between them is equal to that gravitational constant, which means the force of attraction between two bodies of masses 1 kg each and the distance between them is 1 meter. Then the force of attraction between, or gravitational force of attraction between those bodies will be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. अगर दोनों bodies की masses 1 kg है और उन दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, उस केस में द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, दैट विल बी इक्वल टू G, gravitational constant, which means 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो उसकी वैल्यू जो है वो इतनी होगी. एंड इफ वी कंसीडर द फोर्स, तो उस केस में ये जो यूनिट है ये हमारा नहीं होगा. मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg each and distance between them is 1 meter will be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. Okay, the gravitational constant G is numerically equal to the force of gravitation which exists between two body of unit masses kept at unit distance. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी की जिसमें जो उनकी masses है that is unit masses, and if the distance between them is unit distance, then the force of attraction between them is equal to the gravitational constant, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. Now, how we will get the unit of gravitational constant? We will write the equation of universal constant here, means universal law of gravitation. We will write the equation, that is F is equal to G m1 into m2 divided by r square. Now we will put the value of G here, means r will go this side by cross multiplication, F into r square by m1 into m2. So the value or the unit of force is
kg meter per second square. Unit of length is meter square, and m1 is also mass, m2 is also mass, so here we can write kg square. Okay, now kg meter per second square, we can write it as n Newton. It is also written as Newton because force of SI unit of force is also Newton. So here we write Newton meter square per kg square, which is the unit of gravitational constant capital G. Here is one numerical problem based on universal law of gravitation or equation we get in universal law of gravitation. So the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. Here we have to find out the gravitational force between earth and moon. अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर. ओके, मास है, अर्थ की मास है 6.6 into 10 to the power 24 kg, मून की मास है 7.4 into 10 to the power 22 kg and distance between them, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. Also we know that gravitational constant is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, now we'll find out the solution here. G, already we know the value of G, capital G, that is 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the earth m1 is equal to 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of moon is given 7.4 into 10 to the power 22 kg. Now we will convert the distance between earth and moon from kilometer to meter. ठीक है, किलोमीटर से हम लोगों को मीटर में इसे कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए हम लोगों को इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून in kilometer becomes 3.84 into 10 to the power 8 meter. Using Newton's formula, F is equal to G m1 into m2 divided by r square. We put all the values. ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों को values मिली है या क्वेश्चन में जो गिवन है उन सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. मीन्स G की वैल्यू यहाँ पे 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Value of M, that is 6 into 10 to the power 24. Value of m2, that is mass of moon, 7.4 into 10 to the power 22 kg divided by r square, means distance between earth and moon, that is 3.84 into 10 to the power 8 whole square, because r square is given here. Okay, on calculating this value we get the answer 2.01 into 10 to the power 20 Newton. So the gravitational force exerted by earth on moon is 2.01 into 10 to the power 20 Newton. More numerical problem is here. Now we have to calculate the force of gravitation due to earth on a ball of 1 kg mass laying on the ground. Okay, बॉल जो है उसकी मास 1 kg है और वो अर्थ के सरफेस पे है. Okay, again we have the same value. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of earth is 6.4 into 10 to the power 3 kilometer. And G, we already know the value of G, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Here m1 is 6 into 10 to the power 24 kg, m2 1 kg, r we will convert it into meter. We get 6.4 into 10 to the power 6 meter,
and gravitational constant, we already know the value of G, capital G. Now putting this value in formula, that is F is equal to G m1 into m2 divided by r square, we get it as, it is the value of capital G, mass 1, that is mass of earth, 6 into 10 to the power 24 kg, and mass 2, it is 1 kg, and r square means the radius of earth will become here the distance between the objects, that is 6.4 into 10 to the power 6 meter whole square. We calculate the value 9.8 Newton. After solving this, we get the value 9.8 Newton. Kepler's law of planetary motion. Kepler have stated 3 laws using planetary motion. ठीक है, planets के motion के लिए केपलर ने 3 law दिए. Okay. Kepler's law of planetary motion, we have 3 laws given by Kepler for planetary motion. The first law says that the planet move in elliptical orbit around the sun. ठीक है, planets जो है वो एक elliptical oval path पे move करते हैं. ठीक है, it moves in elliptical orbit around the sun, with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit. Means if a body is moving on an elliptical path, then no center is here. We consider 2 foci. Okay, यहाँ पे एक फोकस है और यहाँ पे एक फोकस है, एंड प्लूरल से फोकाई, उसे प्लूरल हम लोग बोलेंगे, फोकस के प्लूरल को फोकाई. तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट जो है इट मूव्स अलोंग अ एलिप्टिकल पाथ. ठीक है, वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं जब सन जो होता है ईदर ऑफ द फोकाई, सन रिमेन्स एट ईदर ऑफ द फोकाई, या तो इस फोकस पे रहेगा सन या फिर इस फोकस पे रहेगा. Okay, first law is very simple. Planet moves along an elliptical orbit with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit. ठीक है, any 2 foci, या तो sun यहाँ पे रहेगा या तो फिर sun यहाँ पे रहेगा, but planet always moves in an elliptical path. Law says that each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time. ठीक है, equal area in equal interval of time. No matter, कोई मैटर नहीं करता है कि सन ये वाले फोकाई पे है या इस वाले फोकाई पे है. इट मीन्स प्लैनेट जो है वो सन से ज्यादा डिस्टेंस पे है या कम डिस्टेंस पे है, जब भी वो एरिया स्वाइप करेगा मीन्स वो इतना ही एरिया ट्रैवल करेगा जितना इस तरफ किया. ओके, ये जो एरिया है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एरिया. मीन्स इफ द टाइम इंटरवल इज सेम, यहाँ पे अगर 6 मंथ में इतना एरिया कवर किया, मीन्स इफ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्वेप्ट रीजन, जो रीजन को वो स्वेप कर रहा है या फिर जितने रीजन में मूव कर रहा है इसके एरिया को कैलकुलेट करें, और यहाँ पे जो है जो सन के नजदीक या फिर सन के जो बहुत लेस डिस्टेंस पे जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो 6 मंथ में ये जो एरिया है दीज 2 एरिया आर इक्वल, ये दोनों एरियाज जो है वो इक्वल है. दैट्स व्हाई द सेकेंड लॉ सेज दैट इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ठीक है, सन मूव कर रही है, और इफ वी ज्वाइन द लाइन फ्रॉम सन टू प्लैनेट, ठीक है, सन से प्लैनेट तक जो लाइन को हम लोगों ने ज्वाइन किया, दैट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे भी हम लोगों ने सन से लाइन को यहाँ तक ज्वाइन किया है, एंड दिस ऑल्सो हियर, यहाँ पे भी हम लोगों ने 6 मंथ में वो कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे हम लोगों ने सन से ज्वाइन कर दिया. दे
swipe equal area in equal interval of time. सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ठीक है, सन से जो हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं, दैट स्वाइप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Third law of Kepler's planetary motion says that the cube of mean distance of planet, okay, the cube of mean distance, here it is mean distance, ठीक है, यहाँ पे ये planet है, ये sun है, इन दोनों के बीच की distance जो है that is mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time taken by it. ठीक है, mean distance why we consider, because planets are always moving. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो distance है means distance is also changing. यहाँ पे जब अगर planet आ जाएगी तो distance भी change हो जाएगी. Okay, तो mean distance of a planet is directly cube of r is cube. The mean distance here we have suppose it is r. So r cube is directly proportional to the time square. It means the cube of mean distance of a planet from sun is directly proportional to the square of time. ठीक है, cube जो है, cube of the mean distance is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. You, very easy law it is, cube of the mean distance is proportional to the square of the time taken. Okay, to remove this sign of proportionality, r cube is equal to constant, means proportionality के साइन को हम लोगों ने रिप्लेस किया constant से into t square, or we can write r cube by t square is equal to a constant. Here r is mean distance of the planet from sun and t is time period of the planet while traveling those distances. Free fall, the falling of a body from the height towards the earth under the influence of gravitational force is called free fall. जब कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उस बॉडी को या फिर उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल. The acceleration produced in a freely falling bodies is same for all the bodies. It does not depend on the mass of the falling body. Okay, यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट किया था कि if we take a feather and a ball, ठीक है, अगर feather और ball को किसी particular height से हम लोग fall कराएं and also if there is no air resistance, ठीक है, वहां पे हवा का कोई प्रभाव ना हो, वहां पे हवा की वजह से, एयर की वजह से कोई रेसिस्टेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो, then the both body, either feather or the ball will touch the ground at same time. यहाँ पे एयर में हम लोगों ने देखा that feather will move, feather जो है वो it will start flying, but in the case of vacuum there is no air, ठीक है, जहाँ पे एयर का कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, then feather and ball will fall together. ठीक है, both feather and ball fall at the same speed and they will touch the ground at same time. Now what is acceleration due to gravity? The uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of earth. ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है, फ्री फॉल के स्टेट में है, इट मींस कि वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उस बॉडी पे जो है वो कौन सा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो रही है, दैट इज gravitational force. Okay, the uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. Earth
कि ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड it is represented by small g. Acceleration due to gravity is represented by small g, and its SI unit is meter per second square. As we know that the SI unit of acceleration is also meter per second square. Here it is also acceleration, small g है, ये भी एक acceleration है, but it is due to gravity, gravitational force of earth की वजह से जो हमें एक्सेलरेशन हो रही है हमारे बॉडी में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हाइट से फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रहा है किसी बॉडी का, उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वही एसआई यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, एंड its value is calculated as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर कोई बॉडी फ्री फॉल के स्टेट में है तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अलग अलग पोजीशन पे अर्थ के अलग अलग जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वेरी करता है. सिंस द रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज मिनिमम. ठीक है, पोल पे जो है एज यू नो दैट अर्थ इज शेप ऑफ एन एप्पल. ठीक है, अर्थ जो है एक ऑरेंज की तरह है, एक एप्पल की तरह है. इट इज नॉट अ कंप्लीट स्फेयर. सो द रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल, ठीक है, पोल पे जो है उसकी जो रेडियस होगी दैट इज मिनिमम. सो द वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट पोल. ठीक है, वैल्यू ऑफ small g, that is acceleration due to gravity, will be maximum at pole. The radius of the earth is maximum at equator. ठीक है, इक्वेटर पे जो है वो रेडियस जो होगा दैट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम. वहां पे जो होगा g की वैल्यू जो होगी वो होगी मिनिमम, बिकॉज इट वेरीज बिटवीन आर स्क्वायर. देखो यहाँ पे 1/r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ठीक है, ये जो है acceleration due to gravity means gravity is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ पे रेडियस जो है वो मिनिमम है पोल पे, so the value of g will be maximum. Radius of earth is maximum at equator, so the value of g will be minimum at equator. As we go up from the surface, ठीक है, अर्थ सरफेस के हम लोग ऊपर जाने लगे. ओके, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस. ठीक है, अब जो सेंटर है अर्थ की उससे वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा. लेट इट बी डिस्टेंस डी. हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर उठ करके प्लेन पे चल रहे हैं डिस्टेंस डी पे. ओके, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो इंक्रीज करेगा, सो द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज. One more case is here. The value of g also decreases when we go down inside the earth, and also it becomes 0 at the center. It also becomes 0 at center because the radius decreases here. यहाँ पे जो है रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगी और सेंटर पे जो है रेडियस 0 हो जाएगी. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at the center of the earth will be 0. We know that the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Now we will calculate that value mathematically. ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसेस से हम लोग उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ओके, इफ वी ड्रॉप a body of mass m from distance r from the center of earth of mass m. ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी मास स्मॉल m हम लोगों ने सपोज किया, और
अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस जो है वो r डिस्टेंस पे है और मास ऑफ अर्थ इज m, कैपिटल M. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी पे फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी अर्थ हमारी? सो g is F is equal to gm, capital M, that is the mass of earth, small m, that is mass of that body, and the distance between them is r square, capital R square, that is the center radius of the earth. Okay, now according to Newton's second law of motion, क्या कहता है Newton's second law of motion? The product of mass and acceleration, the force exerted by the body is directly proportional to the product of mass and acceleration, or we can write it mathematically as F is equal to mass into acceleration. From here we get the value of acceleration, F by m. Let it be the equation 1, this one be equation 2. Now putting the value of this F, ठीक है, इस F की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे. We get A is equal to G into capital M into small m divided by r square into m, this one m. ठीक है, अब ये m और ये m दोनों कैंसिल आउट हो गया. सो एक्सेलरेशन वी गेट capital G, that is universal constant, into mass of the earth divided by r square. We all know the value of capital G, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the earth 6 into 10 to the power 24 kg, and the radius will be 6.4 into 10 to the power 6 meter. Okay, now putting this value in equation, यहाँ पे acceleration है, already we know that acceleration and acceleration due to gravity जो है वो, अगर कोई body free fall हो रही है तो उसकी acceleration जो है वो g में convert हो जाएगी. So हम लोग a को यहाँ पे g लिख सकते हैं. Okay, so g is equal to capital G into m divided by r square. So g यहाँ पे क्या है? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter and whole square, because r square is in the formula. On solving this, we get the value of small g, that is 9.8 meter per second square. If you have any doubts or any question related to the video, or you want any other topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can write on my Gmail account, which is given in the description box. Thank you very much for watching.